अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आहे त सभु भेनरियूं भाइर ख़ैरियत सां हूंदा। अॼु जी जेका असांजी हिते गॾिजाणी आहे उहा यूग्रेड प्रोग्राम जेको सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम आहे यूएसए जे लाइ पर्टिकुलरली उन जे बारे में सॼी गाइडेंस जे हवाले सां आहे। ऐं उम्मीद आहे त जेको आहे सो अव्हांखे हिन सेशन में काफ़ी कुझु सिखण जे लाइ मिलंदो, कीअं अप्लाई करणु खपे, कीअं थींदो। ऐं अॼु असां सां असांजी अधी गॾु आहे क्रांति कृष्ण, जेका न सिर्फ़ु एरेसमस में जे मास्टर्स कई पर उन सां गॾोगॾु उहा यूग्रेड विनर बि आहे। त मां सम्झां थो त इन्हनि खां वधीक जेको बहितर आहे उहो कोई इन शइ खे प्रेज़ेंट कोन थो करे सघे। ऐं मां अदी खे जेको आहे सो हैंड ओवर कंदुसि त उहा पंहिंजे बारे में बि थोरो ॿुधाए ऐं उन सां गॾोगॾु अदी जेके स्लाइड्स प्रिपेयर कयूं आहिनि अव्हां जे लाइ उन ते कैरी ऑन करे। जी अदी। Thank you, Adnan. Assalamu alaikum, everyone. My name is Kranti Krishan, and I was a winner of UGrad in spring 2015. थोड़ो सो मां पंहिंजो background ॿुधाए छॾां थी तव्हांखे, then we will move forward with the slides. So basically, I don't know if you can see the slides. Adnan, can they see the slides? Sorry, I can't hear you. Yes, they can see the slides. You can open the presentation, so can Okay, thank you. Perfect. Okay, so in 2015, I was selected for this scholarship. Basically, I was from Mehran University during my bachelor's. So I was actually in Karachi since my childhood, but I wanted to do engineering and I couldn't get into engineering universities. So I got in Mehran. I was a little bit disappointed and demotivated in the beginning because I was not liking like the studies and everything. So I had this thing in my mind that I want to move forward in life. I want to achieve something. I really want to prove myself. Then this global UGrad program hit me. I was informed that in Mehran, if you go on a exchange program, it's allowed, like you can go on global UGrad, or there was also Erasmus exchange program. So I applied for this and luckily I got it. So I feel really blessed because this experience really changed my life. And I didn't think it was possible for me because being a minority, being female, and like basically I'm from rural areas of Pakistan, from Thar. So I did not expect this to happen, but it happened, and I really want to motivate you that you can also get it. So if you really want to achieve it, then it's not impossible. Even if you are male, female, uh, whatever, you can get it if you really want to do it. So let's start with the presentation. So I will just introduce with this scholarship. So basically this Global UGrad program, it is actually the United States Educational Foundation in Pakistan. It was established in 1950, as you can see, by both the governments of Pakistan and US. And so this scholarship is actually a platform for you to go abroad and then come back to your country. So it just gives you a way to explore, like being in your university, you should be enrolled in any university. If you're in a 4-year program, you should be in your second year or third year to apply. And then when you go to US, you go there for 6 months, and it's a non-degree program. It's an exchange. So you come back and then you continue with your studies. So I will just move quickly through the slides so that at the end we get more time for question and answers. So let's go briefly through the procedure, and then I will go to the SOP part, which is the main part of our presentation, the session, sorry. So the Global UGrad Pakistan program is usually advertised in September or October. You just need to check it online. When is the application form available? And previously they used to have hard copies, but now everything is online. So
You just need to submit all your documents with your application form online. And the photocopies of the transcripts and this was a thing in 2015. But I know that for Meran, I can say that they are attesting the transcripts. So I hope all the universities will be doing that. So there is no separate need for this last point. Okay. So the procedure for this exchange program is basically, first of all, you have to submit the application form. In that application form, you have to fill in all your details. And SOP is the main selection criteria, I would say. SOP is actually statement of purpose, or you can say personal statement. We will come to this topic at the end. And then if you are selected, if your application is accepted, then you are requested to provide reference letters. We will also talk about this in our presentation later. And then you are called for an interview. And during your interview, actually, they ask you to write an essay. They give you a topic on the spot, and you just have to write an essay. They just do it, I think, because they want to test that the SOP written was from you, or did you did you write it like someone else wrote it for you. So I think they just do it to check that. And you also have to write a community service report. So make sure you have something in mind before going to the interview. If you're selected, if you come to this part, then we can always contact, and I can guide you about the interview as well. So this we can discuss it later, not in this part of presentation. And then you have to give a TOEFL test. Then your pre-departure orientation happens in Islamabad for 2 days. And then you are in US, in Washington, D.C. for 4 days. They again train you that what you will do in your universities, how you have to do things academically, financially, culture-wise, everything. They teach you each and everything step by step. And then you are gone for your semester in your respective states. So, what are the benefits of this scholarship? अदी मां थोड़ो रिक्वेस्ट कंदुसि त थोड़ो उर्दू या सिंधी में भी मिक्स कयो, ख़ासि करे बेनिफिट्स के, ताकि हू इंस्पायर थी सघनि. Okay, sure. महिरबानी. ओके सो मूंखे ख़बर न आहे त घणा स्टूडेंट्स मेहरान मां आहिनि या छा, बट दिस स्लाइड आई वुड टारगेट ऑन मेहरानियंस. सो अगरि तव्हां वञो पिया इन स्कॉलरशिप ते, त बेसिकली तव्हां जॾहिं जेका सेमेस्टर तव्हां यूएस में पढ़ो था, उहे क्रेडिट्स तव्हांजा ट्रांसफर थी वेंदा आहिनि जॾहिं तव्हां वापसि ईंदा आहियो. बट ओनली ऑफ द सब्जेक्ट्स जेका तव्हां हुते पढ़ियो ऐं तव्हांजे हिन सेमेस्टर में मिस थियो उहा. अदरवाइज तव्हांखे वापसि अची वापसि ॾियणा पवंदा आहिनि जेका तव्हां मिस कया. बट योर टीचर्स रियली हेल्प यू, तव्हांखे गाइड कंदा आहिनि, सेपरेट क्लासिस ॾींदा आहिनि, ऐं तव्हांजा सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स थींदा आहिनि. सो तव्हां टर्म बैक न थींदा आहियो, या तव्हांखे सप्ली न ॾियणी पवंदी आहे, या स्पेशल पेपर्स चवराईंदा आहिनि, त इहे तव्हां ॾेई सघो था. एंड सभिनी खां सुठी शइ हिन में इहा आहे त इहा फुली फंडेड आहे. लाइक यू डोंट रियली हैव टू पे एनीथिंग एट ऑल. तव्हांखे इस्लामाबाद था वठी वञनि, तव्हांखे वीज़ा, तव्हांजो एयर टिकट जेका बि आहे उहा सभु फुली फंडेड हूंदो आहे. त हिन में तव्हांखे बिल्कुलु बि इन शइ जी टेंशन खणण जी ज़रूरत न आहे. छो त ऑब्वियसली पाण जितां बिलोंग कयूं था, पाण फाइनेंशियली ज़ाहिर पंहिंजे पेरेंट्स खे बर्डन विझणु चाहींदा आहियूं. And plus already you are studying, we have difficult situations, so everyone wants this fully funded thing. So he literally puri fully funded hundiya. And yeah, they deal with your visa, traveling to and from USA, I said before. And the most important thing is you learn a lot. Like for me, mula ye literally life changing experience huyo, because my first time we like out of Pakistan, this was the first time I went abroad, and I lived with different type of people. I experienced different things about my own self. Like obviously पहिरीं कॾहिं पंहिंजा फाइनेंस वग़ैरह मैनेज न कया हुया. एंड बीइंग अ फीमेल तव्हां मतिलबु इहा थोरो डिफिकल्ट हूंदो आहे पाण लाइ. त ईअं पंहिंजी
country मां ये ॿाहिरि निकिरूं parents बि इलाही ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे concerned हूंदा आहिनि त we don't know what will happen and stuff like that त like मूं लाइ इलाही सुठो experience रहियो त I really hope if you are selected तव्हांजो बि experience सुठो ई रहंदो ऐं जेतिरा बि मां reviews ॿुधा आहिनि सभिनि खे मज़ो ई आयो आहे academically बि ऐं personal growth जे हिसाब सां बि So through academic experience of US, yeah, traveling by like my life पहिरीं न कई हुई but हिते वञी मां इलाही traveling कई community services इलाही कयो which made me like मुंहिंजो heart इलाही soft करी छॾियो मां life खे हिकिड़े different perspective सां ॾिसणु शुरू कयो मां मतलब नोटिस कयो त लाइफ में एकेडमिक्स ई सब कुछ न हूंदा आहिनि कम्युनिटी सर्विस सां मूंखे इलाही इलाही इनर हैप्पीनेस जेका मिलंदी आहे उहा हुते इलाही मिली ऐं आई रियली एंजॉयड a lot so yeah and ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि हा पाण हुते पाकिस्तान खे रिप्रेज़ेंट कंदा आहियूं इट्स बेसिकली कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम सो तव्हां जॾहिं हुते वञी पंहिंजे कल्चर खे एॾो प्रमोट पिया कंदा आहियो मां हुते वेई मां सिंधी ड्रेसिस पाइण प्रेज़ेंटेशन्स ॾियण ॿारनि सां सिंधी सॉन्ग्स ते डांस करण जेका ओल्ड एज वारा आहिनि उन्हनि सां उन्हनि खे प्रेज़ेंटेशन ॾियण पंहिंजे मुल्क जे बारे में ॿुधाइण ऐं उन्हनि खे बि इंगेज करण सिंधी सॉन्ग्स में सिंधी पोएम्स में त इलाही सुठो लॻंदो आहे ऐं यू लव योर कंट्री मोर मूंखे ई फील थियो त मां पंहिंजी कंट्री में वेही एॾो पंहिंजे कल्चर खे एक्सप्लोर न कयो जेॾो मां होॾे वञी कयो सो इट वॉज रियली गुड एक्सपीरियंस फॉर यू मी But on the other hand, like good points the are ninja, but few people also avoid this scholarship because of these following reasons. उनमें हिकिड़ो त इहा आहे त जेका तव्हां जॾहिं वेंदा आहियो तव्हांजा घटि सब्जेक्ट्स मैच थींदा आहिनि ज़रूरी न आहिनि हाणे तव्हांजे सेमेस्टर में फॉर एग्जाम्पल 5 सब्जेक्ट्स हींअर आहिनि ऐं तव्हां हुते वञो था ऐं तव्हांजा 5 सब्जेक्ट्स मैच थी वञनि इहे बिल्कुलु पॉसिबल न आहे हार्डली 1 or 2 सब्जेक्ट्स मैच थींदा आहिनि हुते एक्चुअली जॾहिं वेंदा आहियो हिकिड़ो सब्जेक्ट तव्हांखे कंपलसरी अमेरिकन स्टडीज़ जो बि खणणो पवंदो आहे त यू हैव टू मेक श्योर कि तव्हां ई चैलेंज माइंड में रखी पोइ वञो इफ यू आर सिलेक्टेड ऐं इन ते पाण वरी ॻाल्हाए सघूं था इफ यू आर सिलेक्टेड एंड यू वांट टू नो मोर अबाउट इट मां मेहरान जो ॿुधाए सघां थी आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर यूनिवर्सिटीज़ उहे की डील कनि शइ खे बट मेहरान जो मां प्रोसीजर वग़ैरह हर शइ ॿुधाए सघां थी बिकॉज़ आई हैव बीन थ्रू दैट ऐं या हू लाइक मोस्टली छा कंदा आहिनि उहे टाउन्स में तव्हांखे प्लेस कंदा आहिनि छो त तव्हां फर्स्ट टाइम इहे कंट्री मां ॿाहिरि वञो पिया फर्स्ट टाइम में लाइक मोस्टली पीपल जेको हुते हुजनि था उहे मोस्ट लाइक फर्स्ट टाइम यूएस वञनि पिया त लाइक हू कोशिशि कंदा आहिनि त तव्हांखे सिटीज़ में न प्लेस कनि छो त सिटी लाइफ इलाही डिफरेंट हूंदी आहे टाउन्स खां उते इलाही रश हूंदी आहे पीपल थोड़ा सा कंपैरेटिवली रूड हूंदा आहिनि ऐं थोड़ी सी बिज़ी लाइफ ऐं लाइक अगरि केरु फर्स्ट टाइम वञे थो त थोरो होम सिक फील करी सघे थो उनखे अगरि सुठो एनवायरमेंट मिलंदो मे बि उनखे मज़ो न अचे त इन शइ जे करे उहे टाउन में प्लेस कंदा आहिनि मां बि हिकिड़े टाउन में प्लेस्ड हुई मिनॉमनी विस्कॉन्सिन दैट वाज द नेम बट आई वुड से मां टाउन में वधीक इंजॉय कयो छो त हुते पीपल इलाही स्वीट हूंदा आहिनि तव्हां सां इलाही कोऑपरेट कंदा आहिनि तव्हां सां इलाही हेल्प कंदा आहिनि विच आई वुडेंट एक्सपेक्ट पंहिंजी कंट्री में बि शायदि मिले त मूंखे इलाही सुठो लॻो लाइक अगरि आउं टाउन में प्लेस्ड हुई त आई वॉज हैप्पी इहे मूंखे तॾहिं ख़बर पई जॾहिं मां सिटी वेई ट्रेवल करण तॾहिं मां सोचियो मां चयो यार त मां न करे सघंदमि सही आहे आई एम इन टाउन but anyways this might be a dislike point for some people and some people also think that American culture is modern ऐं असांजे कल्चर खां डिफरेंट आहे अलाए छा थी वेंदो लाइक कुझु पेरेंट्स ईअं बि कंसर्न हूंदा आहिनि त ऑब्वियसली असांजा ॿार होॾे वञी अलाए कीअं थी वञनि yeah this is a serious concern so you really have to believe in yourself and you have to stick to your roots that is what all I can say in scholarship they obviously तव्हांखे माइंड में ई रखी वञिणो हूंदो आहे यार मां स्टडीज़ लाइ वञा पई whatever त you have to keep this in mind but some people लाइ इहे हिकिड़ो hindrance हूंदो आहे ऐं some people even avoid to apply because of lengthy procedure. This is not a joke, really, people do that. But I would not suggest this like I session attend agar kayo pya
You shouldn't be afraid of this. We can help you out with this lengthy procedure, and you don't have to worry about it. I can guide you from application part till you reach US. I've done that to some of the students, and they are very happy. Everyone who's gone is happy and have enjoyed their time. ओके हाँ कुछ अगर तव्हांखे एक्सचेंज प्रोग्राम सही न पियो लॻे त तव्हांखे वापसि अचिणो आहे एग्ज़ाम्स कीअं ॾियणा आहिनि ब्ला 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 त तव्हां फुल ब्राइट में बि अप्लाई करे सघो था विच इज़ अ मास्टर्स प्रोग्राम इट इज़ अ 2 years प्रोग्राम ऐं उन में तव्हांखे एक्सचेंज वारो ई न हूंदो आहे but this session is for you grad, so I will just skip this part. If you want more information on this, you can visit the website. So I would like to share a few American things ताकि थोड़ो motivate कयूं पहिरीं त जी मां पहिरीं बि ॿुधायो त लाइक माण्हू हुते इलाही स्वीट हूंदा आहिनि हू हमेशह तव्हांखे स्माइल सां ग्रीट कंदा इवन इफ दे नो यू और नॉट तव्हां लाइ डोर ओपन कंदा त तव्हां पास थियो इहे शयूं मूंखे इलाही अजीब लॻंदियूं हुयूं त ही छो पिया कनि लाइक आई डोंट नीड इट डोंट डू इट बट इहा उन्हनि जे कल्चर जो पार्ट आहे ह्यूमन राइट्स खे इलाही रिस्पेक्ट कंदा आहिनि इंसान खे इंसान वांगुरु ट्रीट कंदा आहिनि त इलाही सुठो लॻंदो आहे ऐं जॾहिं तव्हां ॿिए कंहिं कंट्री में वञो ऐं तव्हां सां सुठो ट्रीट थो कयो वञे यू रियली फील गुड ऐं हुते होस्ट पेरेंट्स तव्हांखे ॾिना वेंदा आहिनि लाइक तव्हांखे कुझु कुझु स्टूडेंट्स खे होस्ट पेरेंट्स सां गॾु ई रहणो हूंदो आहे लाइक उन्हनि जी मर्ज़ी हूंदी आहे इफ यू वांट टू लिव विथ योर होस्ट पेरेंट्स यू कैन असां हॉस्टल में रहिया पे पर असांखे होस्ट पेरेंट्स ॾिनल हुया उहा मोस्टली वीकेंड्स ते असांखे विज़िट कंदा हुया ई सभु तॾहिं तंहिं लाइ करे पिया छो त होमसिक न फील कयूं पाण हुते वञी छो त लाइक मां जॾहिं 2015 में वेही पे त आई कंसिडर्ड माई सेल्फ लाइक स्मॉल त मूंखे हो त लाइक आई शुड हैव समवन ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे केरु फर्स्ट टाइम वञे पियो त होमसिक थियण इलाही ईज़ी हूंदो आहे त हुते तव्हांखे होस्ट पेरेंट्स बि ॾींदा आहिनि जेका तव्हांजी टेक केयर कंदा आहिनि sometimes also financially like they buy you things food वठी ईंदा तव्हांखे ॿाहिरि आउटिंग ते वठी वेंदा असांखे ॿ टे ट्रिप्स ते बि वठी विया हुआ त दे आर वेरी नाइस एंड हू वॉलंटरली कम कंदा उन्हनि खे पैसा न मिलंदा आहिनि उन शइ जा बट दे डू इट फॉर देयर ओन हैप्पीनेस लाइक जीअं पाण कम्युनिटी सर्विस थी वई उन तरीक़े सां एंड हुते जॾहिं तव्हां वञो था त कंट्री प्रेज़ेंटेशन करण ज़रूरी हूंदी आहे लाइक हिकिड़ी एटलीस्ट तव्हांखे करणी हूंदी आहे बट असांखे एॾो मज़ो ईंदो हो पंहिंजे कंट्री खे रिप्रेज़ेंट करण में हुते त असां 7 times हुते कयूं हुयूं लाइक डिफरेंट जॻह ते ओल्ड एज होम्स में जेका असांजी यूनिवर्सिटी हुई उते ॿारनि ॾे विया हुआ असां तॾहिं उन्हनि खे बि ॾिनी हुई त वी डिड इट अ लॉट ऑफ टाइम्स ऐं 20 hours कम्युनिटी सर्विस करण बि तव्हांखे ज़रूरी हूंदो आहे हुते but again I did for 25 hours because I really like doing it agar मूं वटि अञा टाइम हुजेवा त मे बी मां अञा कयां हुआ but I had a very short time like 6 months of course so studies बि गॾु हूंदियूं आहिनि त you cannot manage that much त मां एतिरो ई करी सघियसि and yeah so every morning we used to receive an email हाँ मुंहिंजी जेका यूनिवर्सिटी हुई उनमें कैंपस लाइफ टुडे ईंदो हुयो उनमें रोज इवेंट्स वग़ैरह हूंदा हुया त डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स असां अटेंड कंदा हुया उनमें डिफरेंट स्किल्स सिखंदा हुया कॾहिं गिटार पिया सेखारी कॾहिं पियानो कॾहिं का गेम पिया सेखारी कोई आउटडोर एक्टिविटी आहे त एवरी डे कुझु न कुझु थींदो रहंदो हो ऐं तव्हां डिफरेंट माण्हुनि सां मिलंदा आहियो डिफरेंट कंट्री जे लाइक असांजा ब्राज़ीलियन फ्रेंड्स हुआ इंडियन हुया आई डोंट नो या कीनिया मां हुआ इलाही कंट्रीज़ मां बहरहाल हुते आयल हुया त इट इज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर यू टू लर्न थिंग्स टू लर्न अबाउट योर सेल्फ लाइक तव्हांखे कुझु शयूं अक्सर पंहिंजे बारे में बि न ख़बर हूंदियूं आहिनि जॾहिं तव्हां कंहिं डिफरेंट जॻह ते वञो था उते डिफरेंटली कीअं था बिहेव कयो यू लर्न अबाउट योर सेल्फ एज़ वेल सो या एंड मूला हुते उन टाइम इहा इलाही न्यू शइ हुई त हुते 3 trash bins हूंदा हुया हाणे त शायदि ही शइ कॉमन थी वई आहे बट तॾहिं उहा शइ मूला थोड़ी सी अनयूजुअल हुई लाइक कॉम्पोजिट ट्रैश बैग अलॻि ऐं ऑर्गेनिक अलॻि ऐं प्लास्टिक वग़ैरह जो अलॻि एनीवेज़ सो हाँ असां लाइ हिननि हिकिड़ो आर्टिकल बि लिखियो हुयो लाइक असां 4 स्टूडेंट्स हुया पाकिस्तान मां हुते विया हुआ आई वॉज फ्रॉम सिंध she was from Gilgit-Baltistan, Khyber Pakhtunkhwa, like Anna was from there, and Abdul Muiz from Islamabad. So we 4 were in UW Stout University.
त उन्हनि असांजो इंटरव्यू वरितो हुयो ऐं असांजे बारे में आर्टिकल लिखियो हुयो पंहिंजी न्यूज़पेपर में. सो इट वॉज रियली नाइस एंड आई थॉट तव्हां सां शेयर कयो वञे. एंड या जी मां पहिरीं ॿुधायो त कम्युनिटी सर्विस इलाही हेल्प कई मूंखे ऐं मां हुते हिकिड़ो सब्जेक्ट खयो लाइक मां टेलीकॉम जी स्टूडेंट आहियां. त मुंहिंजो जेको नेटवर्किंग जो इंट्रस्ट है उहा उतां डेवलप थियो लाइक हुते जेका मां नेटवर्किंग पढ़ी छो त छा थिए थो पाण वटि हिते सब्जेक्ट सेम पढ़ूं था पाण टॉपिक्स बि सेम आहिनि पर कॾहिं कॾहिं कंहिं टीचर जो वे एॾो सुठो हूंदो आहे त तव्हां उन ॾे लाइक सब्जेक्ट ॾे अट्रैक्ट थी वेंदा आहियो. त मां सां बि ईअं ई थियो नेटवर्किंग जो मुंहिंजो इंट्रस्ट हितां यूएस मां डेवलप थियो. त यू नेवर नो तव्हांजे लाइक करियर जो स्टार्ट किथां बि थी सघे थो कॾहिं उहो स्पार्क मिली थो वञे तव्हांखे. त यू रियली नेवर नो त पंहिंजो पाण खे एक्सप्लोर कंदो रहिजे हर टाइम ते. एंड आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू एटलीस्ट अप्लाई. सेलेक्ट थियण न थियण नसीब जी ॻाल्हि आहे बट at least you should apply to explore to see like where you stand and like पाण थोड़ा सा पुठियां थी वेंदा आहियूं त ना यार असां कीअं पहुचंदासीं ई नथो थी सघे. डोंट थिंक लाइक दैट. आई थिंक अगर मां पहुची सघां थी त केर बि पहुची सघे थो. सो यू डोंट हैव टू थिंक लाइक दैट एंड देयर आर पीपल टू हेल्प यू आउट. असां सभु आहियूं जेका पुराणा एलिमनाइज़ आहिनि उहे तव्हां सभिनि खे हेल्प करे सघनि था. त आई रियली रिकमेंड यू टू एटलीस्ट अप्लाई. And yeah, as I told you before, I went out of Pakistan for the first time there, and I made a lot of new friends. Like मुंहिंजी class में हिकिड़ी lady हुई, उहा 51 years old हुई, and she was with me in my bachelor's. I was so surprised. I said, "तव्हां 51 years जा आहियो, तव्हां हींअर bachelor's पिया कयो, like how is this possible?" But हुते ईअं न ॾिसंदा आहिनि छा एज है, छा कलर है, कुछ भी जॾहिं तव्हांखे पढ़ण ते दिलि थियो तव्हां पढ़ी सघो था. त इहा शइ मूंखे इलाही सुठी लॻी ऐं इलाही फ्रेंड्स ठाहिया असां एंड आई एम इन टच विथ ऑल ऑफ देम नाउ एज़ वेल. मुंहिंजी जेका रूममेट हुई हुते ब्रियाना शी केम टू मी हिते पाकिस्तान विज़िट कयो मूंखे like I don't know last year or something she came and for 1 month she was here. The like you can make friends and US ma tawat achi sagan ta friends, so this is also possible. I hope I motivated you enough and let's move to your task now. So this is the link for Global UGrad Pakistan. If you click this link, you can go to the page where you can find information, FAQs, how to apply, and the application जेको form है तव्हांजो उहा बि तव्हां access थींदो. Deadline in scholarship जी are 28 April 2021. So obviously make sure to submit it by 25. Last minute time kuch bhi na rakhan khape. This should be our thumb rule because you do never know any moment cha thi to sake. So like make a target of at least applying till 25. And yeah, so the main the important thing is statement of purpose. It was also my first time when I wrote statement of purpose for UGrad. I know it is a very difficult process, like to write about yourself, and it really takes a lot of courage to like put those things on paper. But you can do it. Just have patience. You can do it. We can just go through the slides and we will just do it. Yeah. So, as I've written, the name suggests personal statement. It clearly states that no two person can have similar personal statement. Usually माण्हू छा कंदा आहिनि उहे उन्हनि खे लॻंदो आहे त उन्हनि जी इंग्लिश एॾी सुठी न आहे या उहे एॾो सुठो नथा लिखी सघनि. उहे छा कंदा आहिनि एलिमनाइज़ खां SOP वठंदा आहिनि. तव्हां पंहिंजी सेंड कयो प्लीज़ त मां ॾिसां ऐं पोइ मां लिखां. I would not suggest this. Like इंसान छा थींदो आहे तव्हां जॾहिं हिकिड़ी SOP पढ़ी छॾी त तव्हांजो माइंड पोइ सम वॉट उहा ई फॉलो करण जी कोशिश कंदो आहे. यू कैन नॉट पुट योर यूनिकनेस इन दैट. त उन सां छा थींदो आहे तव्हांजा रिजेक्शन जा चांसिस वधी वेंदा आहिनि. त आई वुड नॉट सजेस्ट दिस एट ऑल. And make sure your personal statements highlight your qualities because तव्हांखे तव्हां खां वधीक केर बि सुठो नथो सुञाणे सघे. So if मां ठीकु है तव्हां मूंखे चओ था पंहिंजी SOP ॾेखार त मां लिखां. I will show you mine, but I've seen my friends, my juniors failing at that because
मां जॾहिं उन खे पंहिंजी ॾेखारी त हुननि उनखे फॉलो करण जी कोशिश कई त उनमें छा थियो त उहा पंहिंजी क्वालिटीज़ हाईलाइट करण थोरो सो पुठियां रहिजी विया उन शइ में त यूएससीएफपी वारा बेसिकली छा कंदा आहिनि डाइवर्सिटी ॾिसंदा आहिनि त केतिरी यूनिकनेस आहे उन्हनि खे केतिरो अपीलिंग थो लॻे ऐं तव्हांजूं पंहिंजूं क्वालिटीज़ जेतिरो सुठे नमूने तव्हां उन पेपर में लिखी सघो था ॿिए कंहिंजूं ॾिसी करे नथा लिखी सघो आई थिंक सो So I would like to give you some tips to how to start working on it. So start your personal statement like long before. I know, like I started writing my SOP in my first year when I was in my second semester, and I like all of a sudden मां लिखी ऐं submit करी छॾी ईअं न हुयो. I wrote it for 6 times. Initially मां छा कयो मां just पंहिंजूं qualities लिखण शुरू कयूं. I tried to explore and even I asked my friends, can you tell me my few of my qualities? What do you think about me? त ईअं करी करी तव्हां एटलीस्ट लिखण कुझु बि जेको बि तव्हांजे माइंड में अचे लिखण शुरू कयो लंबो हुजे नंढो हुजे सिंधी में उर्दू में जीअं तव्हांखे सम्झ अचे थो एटलीस्ट पुट इट ऑन पेपर पुट योर थॉट्स ऑन पेपर फर्स्ट and don't panic just relax and explore ऐं ईअं न हूंदो आहे त हिकिड़े ई ॾींहं में तव्हां लिखी सघो था slowly gradually also you can write तॾहिं तव्हां सुठी लिखी सघंदा वधीक so yeah as I said this don't restrict yourself start writing as many words as you can and yeah try to read it loud and to find what to include and what not जॾहिं तव्हां बार बार उनखे पढ़ंदा त तव्हांखे वधीक समझ में ईंदो यार ही सही न पियो लॻे मां हीअं कयां त वधीक बहितर आहे yeah so if you write your personal statement कुछ माण्हू छा कंदा आहिनि सिर्फ़ पंहिंजो एकेडमिक्स जो लिखंदा आहिनि त मां लाइक टॉप स्कोरर आहियां मुंहिंजी जीपीए हेतिरी आई हीअं थियो लाइक सॼो पंहिंजो एकेडमिक्स जो ॿुधाईंदा आहिनि आई वुड नॉट रिकमेंड दैट बिकॉज़ यूएस वारा को करिकुलर एक्टिविटीज़ खे इलाही फोकस कंदा आहिनि त तव्हां ठीकु है एकेडमिकली त तव्हां स्ट्रॉन्ग आहियो बट what about your extra curricular activities उन में तव्हां किथे लाइ था कयो त उहे इंक्लूड करण इलाही ज़रूरी हूंदो आहे and yes when you are talking about your academics you don't have to like just put in words तव्हांखे realistic goals लिखण खपनि जेका तव्हां like दिल सां फील था कयो त हा यार मां चाहियां थो त मां हीअ कयां and it should be related to whatever you are studying right now and कुछ माण्हू छा कंदा आहिनि पास्ट इलाही ॿुधाईंदा आहिनि मां हीअं कयो ओके तव्हां कयो बट यूज़िंग दैट हाउ विल यू डू इट इन योर फ्यूचर लाइक जेका बि पास्ट जा एक्सपीरियंसिस आहिनि या स्टडीज़ आहे उहा यूज़ करी तव्हां फ्यूचर में कीअं उनखे यूटिलाइज़ कंदा सॉरी and most importantly in the end you have to state के यूएस वञी तव्हां मतलब जेका बि तव्हां पास्ट में कयो ऐं फ्यूचर में करण चाहो था उहो यूएस वञी तव्हांखे उहो शइ कीअं हेल्प कंदी यूएस में अहिड़ो छा आहे जेका तव्हां हींअर न पिया करे सघो या तव्हांखे रिस्ट्रिक्ट पियो करे तव्हांखे हिंड्रेंस पियो ॾेराए ऐं यूएस वञी तव्हां कीअं उहो अचीव करे सघंदा पंहिंजो गोल त इहा शइ एंड में ज़रूरु लिखणु खपे yeah so highlight your wow factor वही मां वरी चवंदमि त like explore yourself पंहिंजो पाण खां पुछो त what is best in me what I can do best and things like that and tell something that makes you different from others थोरो तव्हां सोचींदा पंहिंजे बारे में त तव्हांखे शयूं मिलंदियूं हींअर तव्हांखे लॻंदो हूंदो न यार समझ न पियो अचे कोई शइ न पई अचे माइंड में बट इफ यू like brainstorm keep on thinking त तव्हांखे ज़रूर ईंदा माइंड में and when presenting any of your qualities supported by giving an example ही इलाही सुठी शइ हूंदी आहे छो त तव्हां वर्ड्स त पुट करे छॾंदा आहियो मां कॉन्फिडेंट आहियां मां हीअ आहियां हू आहियां बट अगरि तव्हां हुनखे एग्जाम्पल सां सपोर्ट कंदा त तव्हांजी जेका ऑथेंटिसिटी वधी वेंदी आहे तव्हांजे सेंटेंस जी त ट्राई यूज़िंग दैट and as it is a cultural exchange scholarship you should tell what will be your role as cultural ambassador ई थोरो सो तव्हां अगरि पंहिंजे एसओपी में ॿुधाईंदा त हुननि खे अपीलिंग लॻंदी छो त ही कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम आहे लाइक प्योरली एकेडमिक न आहे त इहा शइ थोरी माइंड में रखी तव्हांखे लिखणु खपे एसओपी and what you shouldn't do in the SOP plagiarism or lies छा थींदो आहे कुझु माण्हू वधीक सुठो लिखण जे चक्कर में कुझु बि लिखी छॾंदा आहिनि जेका दिलि में आयो
ईअं न करणु खपे, छो त जॾहिं तव्हां इंटरव्यू में वेंदा आहियो हू तव्हांजी SOP जे बेसिस ते ई तव्हां खां सुवाल पुछंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे ख़बर पइजी वेंदी आहे त इफ इट इज़ अ लाई और हैव यू प्लेजराइज्ड इट और नॉट, त ट्राई नॉट डूइंग दैट बिकॉज अॻियां तव्हांजी एप्लीकेशन पोइ वीक थी सघे थी हिन जे करे। एंड हा, तव्हां जॾहिं US जे बारे में लिखो त मां US वञणु चाहियां थो बिकॉज़ तव्हां ईअं नथा चई सघो त पाकिस्तान में कुझु बि न आहे ऐं असांजी फील्ड में कुझु न पियो मिले, असां ॿाहिरि था वञणु चाहियूं, हिते असां सां ज़ुल्म पिया थियनि या समथिंग लाइक दैट। यू डोंट हैव टू क्रिटिसाइज योर कंट्री, इवन योर सेल्फ और योर गवर्नमेंट। You have to represent Pakistan. It is basically cultural exchange program. So you have to highlight good qualities of Pakistan, but you can like जेका US वञण जी ॻाल्हि आहे उनखे थोरो ब्यूटिफुली तव्हां अगरि वर्ड्स में पुट कंदा कि मुंहिंजी फील्ड जंहिंमें मां इंटरेस्टेड आहियां, मां रिसर्च कई आहे त US में हिन हिन ते कमु हले पियो, त आई रियली वांट टू एक्सप्लोर दैट थिंग बिकॉज मुंहिंजी कंट्री में अञा ही शइ आई न आहे, त आई रियली वांट टू experiment with that in US and then come back to my country and implement that। अगर ईअं करी तव्हां लिखंदव न त इहा उन्हनि लाइ पॉज़िटिव शइ वेंदी, त तव्हांजी कंट्री जी बुराई बि न पई थिए, हुननि जी कंट्री जी तारीफ़ बि थिए पई ऐं हुननि जो जेको रोल आहे लाइक उहा पूरो पियो थिए, हुननि जी जेका गोल आहे स्टूडेंट सेलेक्ट करण जो उहा बि पूरो पियो थिए। त ट्राई टू डू इट इन दैट वे ऐं डोंट एग्जैजरेट, कीप योर पॉइंट्स एज कंसाइज एज यू कैन। जेका बि पॉइंट है तव्हांजो पहिरीं तव्हां भली हुनखे लिखो जॾहिं तव्हां फर्स्ट अटेम्प्ट्स लिखो पिया, बट आफ्टर दैट व्हेन यू आर रीरीडिंग इट try to make it concise and yeah, avoid using quotes. I don't recommend that. So your essay should be between 200 to 250 words and it should provide clear and detailed description of these 4 points. So I've taken these from Global UGrad 2014 form, but I think these are the same now as well. So जॾहिं भी तव्हां SOP लिखो तव्हां ही 4 points mind में रखो, ही फॉर्म में लिखल आहिनि ये 4 points। These 4 points are very important to keep in mind. So first of all, your interest and personality. Try to write these things first, like तव्हां पहिरीं सिर्फ ये like words put in करो, ये 4 points mind में रखी, तव्हांजा इंटरेस्ट ऐं पर्सनैलिटी। देन तव्हां पंहिंजा एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स कि मां हींअर ये पढ़ां पियो एक्सेट्रा, ऐं फ्यूचर में मां उनखे कीअं यूज़ करी सघां, तो लाइक समथिंग लाइक दैट। एंड देन यू स्टेट योर गोल्स रिलेटेड टू योर फील्ड एंड पर्सनल डेवलपमेंट। उहा शइ कीअं हेल्प कंदी तव्हांखे फ्यूचर में US वञी। सेकेंड ही जेका फोर्थ पॉइंट आहे, द रीजन्स वाई यू विश टू परस्यू देम इन द US एंड हाउ इट रिलेट्स टू योर इंटरेस्ट एंड फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स। कॾहिं कॾहिं छा थींदो आहे, पाण लिखण वेहंदा आहियूं त पाण अलाए केॾां हली वेंदा आहियूं, त उन सां छा थींदो आहे तव्हां पंहिंजे गोल तां हटी वेंदा आहियो। त इहे 4 points हमेशह तव्हांजे अॻियां हुजणु खपनि जॾहिं बि तव्हां लिखो पिया, so that you can come back to these points। तव्हां लिखंदे लिखंदे ॿियो केॾां न हली वञो। So to come back to your SOP, just try reading these 4 points again and again so that तव्हां पंहिंजो पाण खे इन ई क्राइटेरिया में एक्सप्लोर करी सघो। These really helped me, like मां जॾहिं लिखी पे तॾहिं मां ई शइ कई हुई, so I would recommend this thing। एंड रेफरेंस लेटर्स असां जॾहिं हुया तॾहिं असांखे गॾु सबमिट करणा हुया, बट हाणे छा थी वियो आहे त इफ योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड एंड एक्सेप्टेड देन यू आर सपोज टू प्रोवाइड रेफरेंस लेटर्स। उनमें छा हूंदो आहे तव्हां ॿ पंहिंजे प्रोफेसर खां रेफरेंस लेटर वठंदा आहियो, उहे पोइ सबमिट कंदा आहियो। लाइक इफ यू आर सिलेक्टेड त तॾहिं तव्हां खां ई पुछिया वेंदा, न न त फ़िलहाल तव्हांखे सिर्फ़ु SOP ते फोकस करणो आहे। if you get selected then reference letters ईंदा, but मां थोड़ो सो ॿुधाए छॾां थी reference letters जो। So once you are selected you are asked to submit 2 reference letters and yeah, usually people छा कंदा आहिनि, they write it themselves। असल में छा थींदो आहे, प्रोफेसर चवंदा आहिनि असां वटि टाइम न आहे, तव्हां पाण ई लिखियो। बट आई वुड सजेस्ट को लाइक सुठो प्रोफेसर पंहिंजो झलियो जेका तव्हांखे लिखी ॾेई सघे, लाइक तव्हांखे रियली सुञाणींदो हुजे, तव्हां हुन सां कमु कयो हुजे गॾु एंड यू आर अ गुड स्टूडेंट इन देयर क्लास। Try to ask those professors so that they can write for you, even if they are not writing, they are saying कि लिख लो मैं साइन कर दूंगा,
So I would like, this is a painful point, but I would suggest you to ask someone else to write it, because what is the thing, like तव्हांजो लिखण जो हिकिड़ो स्टाइल हूंदो आहे, तव्हां अगरि रेफरेंस लेटर पे लिखंदा त सम हाउ उहा स्टाइल उनमें पोर्ट्रे थींदो ऐं हुननि खे ख़बर पइजी वेंदी आहे त हीअ सेम बंदे लिखियो आहे, त उन सां तव्हांजी एप्लीकेशन थोड़ी वीक थी वेंदी। त आई वुड रियली सजेस्ट तव्हां ॿियो कंहिंखां लिखाओ त बेटर आहे। लाइक तव्हां पोइ रिव्यू कराए सघो था, जी एसओपी बि आहे, यू राइट इट योर सेल्फ, यू ट्राई योर बेस्ट कि तव्हां सुठी में सुठी लिखी सघो, देन तव्हां ॿिए कंहिंखां रिव्यू कराए सघो था, लाइक एनी एलिमनाई और एनी ऑफ योर रिलेटिव। जी मां पंहिंजे रिलेटिव खां रिव्यू कराई हुई, लेकिन हुन सिर्फ़ छा कयो त मां जेका लिखियो हुयो उन ई खे रीफ्रेज़ कयो हुयो, जेका मुंहिंजा सेंटेंसिस हुया उन्हनि खे कुझु सेंटेंसिस खे रीफ्रेज़ कयो हुयो। त तॾहिं मां चवंदी त तव्हां लिखो पाण, एंड में रिव्यू भली कराई वठो कंहिंखां, हिन में कोई बुराई न आहे, बट उहे रिव्यू करण वारो छा कंदो, तव्हांजा उन ई सेंटेंसिस खे रीफ्रेज़ करे सघे थो, पर थॉट्स हू नथो पुट करे सघे, त उहा तव्हांखे ई करणो पवंदो। And reference letter, yeah, so try to write it from someone. So these are few pictures of my exchange program. The first one is I was giving a presentation in US about Pakistan, in New York, and like असां चिल्ड्रन सां गॾु बि वेंदा हुया, पाकिस्तानी सॉन्ग्स ते डांस कंदा हुया, हुननि खे कुझु मूव सेखारींदा हुया, त उहे इलाही इंजॉय कंदा हुआ। त हीअ असां हुते वञी पाकिस्तान ते थोरो घणो बसि प्रेज़ेंटेशन ॾियणु, कुझु असां शयूं बि खणी विया, लाइक पंहिंजूं कल्चरल शयूं, जी सिंधी टोपी, अजरक, इहे लाइक हिन खे जेका आहिनि, इनखे डॉक्टर रॉजर्स, इनखे असां लाइक पंहिंजो ग्रैंडफादर चवंदा हुया, त इन्हनि खे असां इहे गिफ्ट ॾिनो हुयो, ऐं हिते बि असां प्रेज़ेंटेशन ॾिनी हुई। त आई जस्ट वांटेड टू शेयर दीस few things out of a lot. So this quote I really like. It says exchange is not a year in a life, but a life in a year, and I really believe in that. So because it was a life changing experience for me, and like असां स्टार्ट पे कई प्रेज़ेंटेशन, तॾहिं मूंखां अदनान इहो ई पुछियो पे त इज़ इट पॉसिबल कि तव्हां जॾहिं यू ग्रेड में जीअं एक्सचेंज में सेलेक्ट था थियो, तव्हांजा मास्टर्स में सेलेक्ट थियण जा चांसिस वधी था वञनि? आई पर्सनली डोंट थिंक सो, बिकॉज़ मूंखे ईअं थो लॻे त तव्हां जॾहिं एक्सचेंज वग़ैरह में वञो था, तव्हांखे बूस्ट मिली थो वञे, त तव्हांजी पर्सनैलिटी खे इंटरनली बूस्ट मिले थो, उन जे बेसिस ते तव्हां जॾहिं मास्टर्स वग़ैरह में अप्लाई था कयो त तव्हां मोर कॉन्फिडेंट हूंदा आहियो, तव्हां एसओपी वग़ैरह लिखण, तव्हां प्रोसीजर सां सम हाउ फेमिलियर थी वेंदा आहियो, त मे बी तॾहिं तव्हां वधीक एसओपी सुठी लिखी सघंदा आहियो, ऐं नो डाउट हेल्प कंदो हूंदो, लाइक तव्हांजी प्रोफाइल सुठी थी वेंदी आहे त ही छोकिरो या छोकिरी पहिरीं बि वियल आहे एक्सचेंज ते ऐं वापसि मोटी आई, त दैट मीन्स शी इज़ ऑथेंटिक पर्सन and she won't do anything wrong there, and like we should select them. So no doubt ये हल्की सी image वेंदी आहे, but it doesn't mean कि तव्हां एक्सचेंज में विया आहियो त तव्हां डेफिनेटली मास्टर्स वग़ैरह में सेलेक्ट थी सघो था। You really have to work hard. Like मां यूग्रेड में वेई हुई 2015 में, then मां इरास्मस में मास्टर्स जेको मां कयो इरास्मस में कयो आहे, like I was selected in PixNet program of Erasmus, and my first year was in UK and second one was in Italy. So it doesn't mean I was in exchange program tadi mujo Erasmus mein थियो, because UGrad is different and Erasmus is different. But hikri ॿी भी like I don't know these are true or not, but I think जेका UGrad में select थींदा आहिनि उन्हनि जो Fulbright में select थियण जो chances पोइ बि वधी वेंदो आहे, त it gives you benefits somehow, but not completely. You have to work hard at every stage of your life. So I wish you good luck, and if you have any questions, I'm open. I can answer them if I can. महिरबानी अदी, Thank you so तव्हां जेको much. आहे सो मां सम्झां थो त हलो, मां सम्झां पियो त तव्हां इन यूग्रेड जे बारे में हर शइ डिटेल में कवर कई आहे। Yeah. आवाज़ अचे पियो?
मां जी जी सम्झां थो त अवां जी जी हर शइ खे ज़बरदस्त तरीक़े सां डिटेल में कवर कयो आहे ऐं असांजा जेके दोस्त आहिनि उहे तमामु मोटिवेट थिया हूंदा इन में अप्लाई करण जे। कुझु क्वेश्चन्स आहिनि चैट में, उहे मां शो कयां थो, अवां उन्हनि खे एड्रेस कयो। जी जी विजिबल आहे अवां खे? आई एम इन ज्योग्राफी, कैन आई अप्लाई एज वेल? I cannot see geography. You mean what? Like तव्हां छा पिया कयो geography में? Sorry, अंडर ग्रेजुएशन? आई थिंक अंडर ग्रेजुएट जो ई स्टूडेंट हूंदो। यस, आई थिंक सो। हाँ, सो अंडर ग्रेड में लाइक तव्हां अगर 4 ईयर प्रोग्राम में आयो, फॉर एग्जांपल तव्हां पंहिंजी एजुकेशन जे 15th या 16th ईयर में आयो, तव्हांखे वेबसाइट ते बि इहा शयूं लिखल आहिनि, तव्हां जेका मां वेबसाइट जी लिंक ॾिनी आहे, इफ यू गो टू दैट आई विल जस्ट शो इन अ मोमेंट। मां दी हिन खे ऐड कंदो हलां त जेको 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम आहे उन में जेके जेके दोस्त या भाइर भेनरियूं 3 या 2 साल में आहिनि उहे एलिजिबल आहिनि, ऐं जेके यस 5 साल डिग्री प्रोग्राम में आहिनि उहे चाहे 2, 3 या 4 साल में आहिनि त उहे एलिजिबल आहिनि। यस त यू आर राइट। त इहो ईअं प्रोग्राम आहे। अगरि 5 सालनि जो आहे त तव्हां 2, 3, 4 साल ताईं अप्लाई करे सघो था। 4 सालनि जो आहे त 2, 3। ऐं ॿी ॻाल्हि आहे त हिकिड़ो क्वेश्चन असांजा दोस्त एड्रेस कंदा आहिनि त मां जी 2 सालनि जी बी आहे, छा मां अप्लाई करे सघां थो? उहे बि करे सघनि था जेकॾहिं उहे जेको आहे सो लास्ट ईयर ऑफ बीए में आहिनि। वरी कुझु हिकिड़ा क्वेश्चन ईंदा आहिनि त मां बीए कई आहे 2 इयर्स जी, हाणे एमए कयां पियो, त बिल्कुलु उहे बि करे सघनि था अगरि उहे एमए जे फर्स्ट ईयर में आहिनि। अॼु यस हिकिड़ो ॿियो क्वेश्चन आहे ईअं ई त आई एम इन केमिस्ट्री, कैन आई अप्लाई? मां सम्झां थो त हिन सब्जेक्ट वाइज़ फील्ड ते जेकॾहिं थोरो ॻाल्हायो त केरु केरु अप्लाई करे सघे थो, कहिड़ी फील्ड्स वारा? हाँ, फील्ड असल में छा थींदो आहे, जॾहिं तव्हां सेलेक्ट थींदा आहियो त ईअं न हूंदो आहे त लाइक यू सेलेक्ट योर यूनिवर्सिटी इन यूएस। तव्हांखे तव्हांजी यूनिवर्सिटी ॾिनी वेंदी आहे, तव्हांजो जेको बि बैकग्राउंड आहे, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, मेडिसिन में बि तव्हां आयो, इंजीनियरिंग में आयो, त हू तव्हांखे पाण ई एलोकेट कंदा आहिनि इन यूनिवर्सिटी, इन प्रोग्राम जेको तव्हांजे लाइक एप्रोप्रिएट हुजे, तव्हांजी स्टडीज़ रेलिवेंट हुजे। त सब्जेक्ट वाइज़ इहा न आहे त तव्हां नथा करे सघो। लाइक जेका बि तव्हांजो बैकग्राउंड आहे, यू ऑल कैन अप्लाई। उहे उन्हनि जो हेडेक आहे त उहा कहिड़े प्रोग्राम में तव्हांखे विझी था, लाइक कहिड़ी यूनिवर्सिटी आहे, कहिड़ो टाउन आहे, उहे कंदा आहिनि। बट येस, यू कैन अप्लाई, एवरीवन कैन अप्लाई। अदी इन में का प्रेफरेंस हूंदी आहे छा कंहिं पर्टिकुलर माण्हुनि खे, जीअं रूरल एरियाज़ खां आहिनि या यस माइनॉरिटीज़ आहिनि या यस छोकिरियूं आहिनि? इन ते थोरो ॻाल्हायो जेकॾहिं त थोरो ख़बर पए माण्हू। जी। सो बेसिकली ये इलाही मोटिवेट कंदा आहिनि, डाइवर्सिटी इलाही इन्हनि खे पसंदि आहे, त हीअ कोशिश कंदा आहिनि जंहिंखे अपॉर्चुनिटीज़ न मिली सघियूं आहिनि, जीअं पंहिंजा रूरल एरियाज़ वारा आहिनि, उन्हनि खे हीअ लाइक इहा स्कॉलरशिप वारा वधीक प्रिफर कंदा आहिनि। सेकेंड क्राइटेरिया इहा हूंदा आहे, इफ यू आर अ फीमेल, इफ यू आर इन अ माइनॉरिटी, इफ यू आर अ फीमेल, इफ यू आर फ्रॉम रूरल एरियाज़, त ही टे क्राइटेरियाज़ आहिनि जंहिंखे उहे वधीक प्रिफर कंदा आहिनि। बिल्कुलु। अदी हिकिड़ो लास्ट क्वेश्चन मां चाहींदुसि तव्हां एड्रेस कयो। उते अलॉन्ग विद द अकोमोडेशन थोरो स्टाइपेंड बि ॿुधायो असांजी ऑडियंस खे, ताकी उन्हनि खे ख़बर पए त पैसा केतिरा मिलंदा आहिनि, त हू थोरो इन सां बि इनकरेज सघनि त अप्लाई करिणो आहे। इन्हनि शयुनि ते बि थोरो बुक्स मिलंदियूं आहिनि, न मिलंदियूं आहिनि, की ॿियूं कहिड़ियूं कहिड़ियूं फैसिलिटीज़ हूंदियूं आहिनि, इन ते थोरो ॿुधायो। ओके, सो तव्हां मां जी चयो, इट इज़ फुली फंडेड, लिटरली फुली फंडेड। तव्हां जॾहिं खां पंहिंजे घर खां निकिरो था ऐं वापसि पंहिंजे घर अचो था, हू तव्हांखे सभु कुझु ॾींदा आहिनि। ऐं स्टाइपेंड एतिरो हूंदो आहे, तूं इनफ हूंदो आहे। मां तव्हांखे ॿुधायां पई, जेका मां ट्रैवलिंग बि कई, मां इलाही ट्रैवल कयो, लाइक 52 स्टेट्स आहिनि यूएस में आई गेस, ऐं मां लाइक न्यूयॉर्क, शिकागो, लास वेगस, लाइक I think I completed at least 5 or 10 of them, जेतिरो टाइम मिलंदो हुयो। त मां ट्रैवलिंग कई, ट्रैवलिंग इलाही एक्सपेंसिव हूंदी आहे, लाइक एयर फेयर हूंदो आहे, अकोमोडेशन, एवरीथिंग, त उहे सभु मां उन ई पैसे सां कयो। त स्टाइपेंड इनफ हूंदो आहे तव्हांजो, हुते तव्हां आराम सां खाई पी सघो था। अकोमोडेशन उहा तव्हांखे पाण प्रोवाइड कंदा आहिनि, लाइक तव्हांखे पाण खे न ॾियणो हूंदो आहे रेंट वग़ैरह। अकोमोडेशन जा पैसा उहे पाण ई ॾींदा आहिनि, तव्हांखे स्टाइपेंड अलॻि मिलंदो आहे, उहा सिर्फ़ु तव्हांजे पंहिंजी लाइक लग्जरियस लाइफ लाइ हूंदो आहे। छो त असां जिथे यूनिवर्सिटी में प्लेस्ड हुया, असांखे फूड लाइ बि पैसा न ॾियणा पवंदा हुआ। असांजो कार्ड हुयो, उन मां पैसा डिडक्ट थींदा हुया, उहा कार्ड में पैसा हुननि विझी ॾिना हुया। असांखे जेका स्टाइपेंड मिलंदो हुयो, उहा सिर्फ़ु असांजे लाइक
फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू डू शॉपिंग, आई वांट टू ट्रैवल समवेयर, उन्हें ला हूंदो हो। ऐं बुक्स यूजुअली लाइब्रेरी में मिली वेंदियूं आहिनि, मूंखे फ्री मिली हुयूं, लाइक असांजी यूनिवर्सिटी में इहा प्रॉब्लम न हुई। किथे किथे ईअं थींदो आहे त लिमिटेड बुक्स मिली सघनि थियूं, लाइक तव्हां इशू कयो फ्यू टाइम लाइ, पोइ तव्हां वापसि ॾियणियूं आहिनि तव्हांखे, समथिंग लाइक दैट। बट कंहिंखे बि पैसनि जी कंप्लेंट न आई आहे जेतिरा बि आहिनि। So you don't have to worry about that. थैंक यू। अदी हिकिड़ो एप्रिसिएशन कमेंट आहे, थैंक यू फॉर योर, थैंक यू अकील, तव्हां एप्रिशिएट कयो। ऐं हिकिड़ो ॿियो क्वेश्चन आहे त फर्स्ट ईयर एमए में अप्लाई करे सघां थो, मां सम्झां इहा ॻाल्हि एड्रेस थी चुकी आहे त फर्स्ट ईयर एमए वारा अप्लाई करे सघनि था, ऐं इहो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आहे। जेके बि सेकेंड ईयर, ॿियो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेको आहे न फील्ड, तव्हां अप्लाई करे सघो था, कहिड़ी बि फील्ड हुजे उनजो कोई इशू कोन्हे। Yes. मां सम्झां थो त तमामु बहितरीनु सेशन थियो। मां तव्हांजो शुक्रगुज़ार आहियां, तव्हां पंहिंजी मसरूफ़ ज़िंदगी मां टाइम कढी असां दोस्तनि खे जेको आहे माना ऑडियंस खे ॾिनो ताकी हू हिन ते गाइडेंस करे। ऐं मां अदी चाहींदुसि अगरि को असांजे हिन ग्रुप तां अव्हां सां कॉन्टेक्ट करे एप्लीकेशन खे कीअं, जेकॾहिं रिव्यू जे लाइ, मोटिवेशन लेटर जे या ॿी का बि हेल्प खपे त अव्हां उन्हनि खे काइंडली गाइड कजो ताकी असांजा दोस्त भेनरियूं अॻिते निकिरी अचनि ऐं अॻिते। इहा अव्हांखे हिकिड़ी रिक्वेस्ट आहे। Yes, yes, sure. मुंहिंजी ईमेल बि मां ॿुधाए सघां थी, लाइक कैन आई टाइप इन द चैट? यस, तव्हां टाइप कयो, मां Yes. उनखे स्क्रीन ते शेयर करे छॾियां थो। हाँ, त ही मुंहिंजी ईमेल आहे। अगरि कंहिंखे एसओपी रिव्यू कराइणी आहे या कोई बि इंटरव्यू जी हेल्प खपे, whatever, at any stage, I said, like starting from the application till you reach US, I can help you with anything I can. I will try my best. थैंक यू अदी, मां अव्हांजी जेका ईमेल आहे उते कमेंट्स में छॾे ॾींदुसि। ऐं थैंक यू सो मच, अव्हां असांखे टाइम ॾिनो, लख थोरा महिरबानियूं। My pleasure to serve my country and my people.